Let us begin today's meet. First, mention lecture details in the notebook. Today is 21st of October and we are in Syrian lecture 2 of the day for physics by MVS. Last time we discussed phenomenon reflection of light. Today we will proceed to study one more interesting phenomenon, refraction of light, shown by the light passing through non-homogeneous medium. So we will begin with refraction, one more interesting phenomenon of light. It is article 9.5 on page 164. 9.5, 164, refraction of light. When light executes phenomenon of refraction, we can note few features. So let us discuss features of phenomenon refraction. First feature, this refraction always occurs at the boundary separating two optical media. That is, on both sides of the boundary, the media should be optical in nature. Through these both media, light should pass. So this phenomenon is always observed at the boundary separating two optical media having different optical densities, and hence comparing optical densities between the given pair we can define second feature, denser medium in the pair and rarer medium in the pair. So boundary in nature is transparent one. It is called boundary from rarer medium or boundary transparent. So boundary is transparent, refraction is observed. Second feature, when you talk about pair of media depending on their values of optical densities, we can define denser medium and rarer medium for the given pair. So the medium which has larger optical density is considered denser out of these two, and which has smaller optical density is considered as a rarer medium. So this is the second feature. Third thing we can define, the boundary may be curved or plane. For example, if you study the refraction of light through glass tip, then this boundary, upper surface of glass tip, is plane. When you talk about refraction phenomenon through lens, lens is a transparent medium, optically transparent, bounded by two surfaces. So this is curved. So third feature, boundary may be curved or may be plane. Then we will proceed further. During refraction, what happens if the boundary is optical, rarer, transparent, light passes from one medium into another medium. This is its fourth feature. Light changes the medium during refraction occurs. These are general features. And when changes the medium,
When moves from medium A into medium B, its velocity gets affected. So what is the fifth feature? Velocity changes during refraction when light changes the medium. The extent to which velocity has affected, it might be reduced, it might be increased depending on the nature of the medium in which refracted ray enters, but it definitely changes. So the extent to which velocity has affected, we give it in terms of relative refract index. So this is number 5. So we define relative refractive index of second medium, that is refracted medium, with respect to the first incident medium. So if light moves from medium A into medium B, we define refractive index mu of B with respect to A, where A is incident medium and B is refracted medium. In our book, they have used symbol N. So relative refractive index के कंसेप्ट हम लोग यहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं. It is the ratio of velocity of light in first medium to velocity of light in second medium. So this is first formula. Relative refractive index of B with respect to A, second medium with respect to the first medium, is VA upon VB. If the light initially is traveling through air or vacuum, velocity in first medium will be velocity of light in air, and this is called absolute refractive index of medium B. So if first medium is air, we write absolute refractive index of given medium, second medium, refracted medium B, C upon V into B. This can be rewritten in terms of different forms. So this is one more form. Sixth feature, it is observed if the path of light is reversed. A से B में जा रहा है, अभी हम लोग उल्टा करते हैं. B से A में जाने के सोचते हैं. 1 minute. 1 minute है बेटा. So what happens that time? Due to reversibility of path principle, आप लोगों को तो मालूम है, it is proved n of B to A is always equal to 1 upon n of A to B. Refractive index of second with respect to first is always reciprocal of refractive index of first with respect to second. ये एक डेरिवेशन हम लोगों को मिलता है. And refractive index of B with respect to A can also be rewritten in terms of absolute refractive indices. Refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. This is the second formula. VA upon VB is equal to NB upon NA. It is already proved. ये सब proof हो चुका है. So we can also write it as 1 upon A with respect to B. So this is the third formula for relative refractive index. V means velocity. Velocity of light in first medium upon velocity of light in second medium. Here, velocity, absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. When we talk about
in velocity, it implies this change occurs because direction of ray entering the other medium changes. It does not follow the same initial path after crossing the boundary. ये उसकी खासियत है. इसलिए क्या होता है, when it goes enters the other medium, suppose traveling from air incident at point P on the upper surface of glass tip and entering suppose the glass, then it does not follow the same path. Instead, it changes its direction. और डायरेक्शन चेंज होती है, इसीलिए उसकी वेलोसिटी भी अफेक्ट हो जाती है. We can relate then relation. अभी इंसिडेंट रे आप लोग निकालते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या आएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. If I changes, definitely R changes. Go on changing values of I and find corresponding values of R. Take the ratio of their sine I upon sine R. For given pair of media, for any case or for any value of I, R gets self-adjusted so that ratios sine I upon sine R always remains constant. For example, suppose I is 30. Find its corresponding value of R. Suppose I is 40. Find value of its corresponding R. And then take ratio sine I upon sine R in each and every case. It is calculated and each fluid always remains constant for given pair of optical media. Its value, when found practically, comes to be NB by 8. So sine I upon sine R रेशो की वैल्यू इतनी ही आती है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव है. सो वन मोर फीचर व्हाट वी कैन राइट, NB of A is equal to sin I upon sin R. ये वन मोर फॉर्मूला मिलता है. देखो कितने फॉर्मूले मिल रहे हैं हम लोगों को. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of second medium with respect to first medium is velocity in first medium upon velocity in second medium. Second formula, absolute refractive index of second medium upon absolute refractive index of first medium. Third formula, sin I divided by sin R. Velocity can be rewritten in terms of wavelength. V is equal to n lambda, you all know, and n frequency never changes even the light changes the medium. So in terms of velocity also you can rewrite it, velocity in first, that is incident medium, upon velocity in refracting medium. कितने सारे फॉर्मूले मिल रहे हैं देखो. And since velocity gets affected due to change in direction, what happens actually? क्या हो जाएगा बताओ. देखो अभी क्या मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ. This is the point placed at the bottom of the beaker. Beaker is initially empty. You can see the point. Due to only reflection, इधर refraction नहीं काउंट हो रहा है. If I pour water inside it, what do you feel? The coin has lifted a little up. क्योंकि after entering the water, the direction changes. ये direction ऐसी थी ना, जब reflection चालू था तभी, अभी उसकी direction change होती है. And when such refracted rays enter our eye locates the position of coin, not actual. That is called apparent position. So we feel after pouring a water, पहले नहीं, a coin has lifted a little up. It is lifted from its actual position. इधर मिलता है हम लोगों को coin.
These effects we observe due to refraction because velocity gets affected, direction changes, and hence position of the object also changes. One more illustration. You can have number of illustrations which can be explained on the basis of pure refraction. अलग क्या होता है? We can see sun a little early, a little earlier than its actual rise, and you can see sun a little after even it sets down. ये भी रिफ्रैक्शन के वजह से ही होता है. क्या होता है देखो, मैं डायग्राम निकाल के बोलती हूँ. ये अर्थ हॉरिजॉन है, इसमें पूरा एटमॉस्फेयर है. सराउंडिंग इज द एटमॉस्फेयर. सपोज सन इज समवेयर हियर. Early in the morning, the sun is below horizon. We are over here. So when these rays enters the atmosphere, ये एटमॉस्फेयर भी ना होमोजेनियस नहीं है. When you move up and up, its density goes on decreasing. बराबर है ना. So it passes through number of optical layers having different optical densities. तो उसका भी रिफ्लेक्शन. सपोज एटमॉस्फेयर हम लोग टाइम बीइंग होमोजेनियस एज्यूम करते हैं, तो स्पेस से आया एयर और बाद में वो एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ. तो एटमॉस्फेयर इज मोर थिकर, मोर डेंसर देन एयर. So light does not follow the same path. Instead, it will bend. This is refracted ray, and such refracted ray enters our eye. And if you produce it back, you will observe sun position over here, not here. Actually, it is here. But on account of refracted ray forming image on our retina, we feel sun is here at position B, even if it is actually lying at position A. This is also is due to refraction. So you get change in position, apparent position and actual position. And hence you can define refractive index with one more equation. देखो मैं क्या बोलती हूँ. एक कॉइन है, इधर से हम लोग हाइट काउंट करते हैं. Suppose this height is h1. So this is the actual height. But when I pour water inside it, it appears a little uplifting. So this will be its apparent position with respect to us. हम लोगों को ऐसा लगता है उसमें कुछ चेंज नहीं है. एक्चुअली it has not changed its own position, but due to refraction, when water is poured inside the beaker, we feel the coin is lying at B. So this is called apparent height h2. So it is also proved, if you take ratio of h1 to h2, it comes to be refractive index of second medium with respect to first medium. So this is one more formula we get in terms of apparent depth and real depth. Illustrations देखो on page number 165. They have given illustrations of refraction. Illustrations means examples. Different effects we generally observed in daily life. So refraction ऐसा सामने दिखता नहीं है, हम लोगों को उसका इफेक्ट मिलता है कि वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन क्या करता है, चेंज कर देता है. And we always observe apparent position when refraction occurs. अगर बीकर एम्प्टी है तो रियल डेप्थ मिलेगी, लेकिन अगर refraction occurs we will observe apparent depth. So this is one more formula to relate relative refractive index of second medium with respect to first medium.
Based on this formula, H2 by H1 by H2, they have given one solved numeric. देखो एग्जाम्पल 9.4 देखो ऑन पेज नंबर 165, हाँ उसमें एक न्यूमरिक दिया हुआ है, घर जाके आप रीड करो, मैं आपको एक हिंट देती हूँ। हाँ एक मिनट चालू रखना, जो दिया है ना उसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। ट्राई एट होम, अदरवाइज आई विल कंसिडर इट नेक्स्ट टाइम। सो व्हाट हैपेंस, उसने क्या दिया है, ए क्रेन इज फ्लाइंग अबव अ स्टील क्लियर वाटर पॉन्ड। एक पॉन्ड है, ये पॉन्ड में वाटर फील है, ये वाटर की अपर लेवल है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। उसके ऊपर 6 मीटर ये हाइट कितनी हो गई, 6 मीटर है। इधर एक बर्ड फ्लाई कर रहा है, ओवर हियर द बर्ड इज फ्लाइंग, ऐसा उन लोगों ने बोला है। बाद में क्या दिया है, फॉर द क्रेन फिश अपीयर्स टू बी 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर। इसमें एक फिश है, बर्ड को क्या लगता है, क्रेन को क्या लगता है, दैट फिश इज एट 6 सेंटीमीटर, हियर फिश है, ऐसा बर्ड को लग रहा है, बर्ड को लग रहा है ना। एक्चुअली द फिश इज नॉट एग्जैक्टली एट 6 सेंटीमीटर, उसकी वो अपरेंट पोजीशन हो गई ना, क्योंकि इधर से बर्ड के आई से रे आते हैं, वाटर बाउंड्री क्रॉस करके फिश तक पहुंचते हैं। सो डेफिनेटली हियर रिफ्रैक्शन ऑकर्स, द रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये उसकी अपरेंट पोजीशन है। एक्चुअली फिश इज लाइंग स्टिल मोर बिलो द 6 सेंटीमीटर। बर्ड को लगता है, वो कॉइन का मैंने बोला ना, कॉइन इधर है, लेकिन हम लोगों को क्या लगता है, वो थोड़ा H2 हाइट है, एक्चुअल हाइट कितनी है, H1, वही इधर इंपैक्ट है कि ये 6 सेंटीमीटर बर्ड को लगता है, यानी कि रियली द फिश शुड बी मोर देन 6 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल ऑफ द टैंक। हाँ ये तो बराबर है, तो ये 6 सेंटीमीटर H2 है, अपरेंट हाइट है, एंड यू हैव टू फाइंड द रियल हाइट, एक्चुअल पोजीशन क्या है, फिश at what distance the fish should be, so that for fish it will appear at 6 centimeter. So H2 is given and you have to calculate H1. Real depth upon apparent depth is n. आगे क्या देते हैं देखो, how much deep should the crane immerse its beak to pick up the fish? अगर वो उसने डाइव लगाया so that its beak will reach only up to 6 centimeter, then that crane is not able to trap the fish, to catch the fish, because the fish is lying still below 6 सेंटीमीटर के हिसाब से उसने अगर डाइव लगाया ना, तो वो फिश को पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि फिश 6 सेंटीमीटर में है ही नहीं, वो स्टिल उसके नीचे है। So what should be the real height, ऐसा उन लोगों ने पूछा है। हाँ अभी क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर शुड बी H1 अपॉन H2, H2 गिवन इज 6 सेंटीमीटर अपरेंट हाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया है 4/3, वाटर दिया है मींस एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, लाइट इज इनिशियली ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर, so NBA you will replace by only NB in H1 by H2. This is given 4/3 is equal to H1 upon H2. H2 करते हैं, so H2 will be then, H1 will be then H2 into 4/3. So 6, 3 2s are and 4 2s are 8. So initially
Initially, the fish should be at 8 centimeter below the water. So अगर it dies ऐसे हिसाब से कि its beak reaches up to 6 centimeter, then the bird will not able to catch the fish. अभी उल्टा करते हैं, हम लोग फिश के हिसाब से देखते हैं. सो व्हाट हैपन्स फॉर द ऑब्जर्वर in rarer medium observing the object in denser medium, that object appears a little up. फिश के हिसाब से देखो, ये फिश है, वो है कहाँ, एक्चुअली 8 सेंटीमीटर के ऊपर है. बर्ड कहाँ फ्लाई हो रहा है, 6 सेंटीमीटर. लेकिन अगर फिश का हिसाब रखे तो हियर ऑल्सो रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है. एंड हेंस फॉर फिश दिस बर्ड अपीयर्स अ लिटिल अप द रियल पोजीशन. फिश को क्या लगता है, वो 6 सेंटीमीटर अबव द वाटर है ही नहीं, वो ज्यादा हाइट से मूव हो रहा है. So in second part, for fish, how much above the surface the crane appear? 6 मीटर नहीं, 6 मीटर से ज्यादा आंसर आएगा. The same formula should be used, only that time you should make the path reversibility of the light, and hence the formula will place. So H1 H2 है ना, वो उल्टा लेने का. n of b with respect to a now will become n of a with respect to b, बराबर. and hence we can write it as h2 upon h1. सो फिश के हिसाब से अगर आप लोगों को बर्ड की हाइट अपरेंट पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा h2 अपॉन h1. और इस तरह उसने वो सॉल्यूशन दिया है. I will post few more numerics of the same kind. Today, try to solve it. I will give you solutions of that numeric also. So I am closing the meet for all.